Hello everyone, welcome back to Vital Nursing Note. Today I'm going to explain the Henry Fayol 14 principles of the management. Introduction of Henry Fayol. Henry Fayol, also known as father of the modern management, Henri Fayol of France industrialized introduced these principles to help organization work more effectively and efficiently. ओके हेनरी फैलोट ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वर्क more effectively and efficiently. Let's talk about 14 principles of the Henry Fayol. First principle है Division of labor. Second, authority and the responsibility. Third, discipline. Fourth, unity of command. Fifth, unity of directions. Sixth, sub-coordinations of individuals' interest. 7. Remunerations. 8. Degree of the centralizations. 9. Scalar change. 10. Order. 11. Equity. 12. Initiatives. 13. Stability of tenure. 14. Ascript de corps. It is the principles of Henry Fayol. 14 प्रिंसिपल ऑफ लेबर का फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर में हम क्या करेंगे, जो वर्क है उसे हम डिवाइडेड कर देंगे वर्कर में. ओके उसकी वजह से इंक्रीज इफिशिएंसी एंड द स्किल, जो वर्कर की स्किल एंड इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. Work should be divided among individuals and the groups to ensure that efforts and attention are focused on the specialized portions of the task. Fayol presented work specializations as the best way to use the human resource of the organizations. Okay, organization में its best way है division of labor. Second principle of the management, authority and the responsibility. Authority, that means rights to give orders, and the responsibility, that means accountability for work. Okay, both are the closely related. Authority was defined by Fayol, the right to give orders and the power that extends obedience. Okay, जो authority का मतलब क्या होता है कि हमें rights होता है कि हम किसी को order दे सकते हैं. Responsibility involves being accountable and it's therefore naturally associated with authority. Whoever assumes authority also assumes responsibility. Responsibility, that means it is काम करने की जिम्मेदारी लेता है. Okay, whatever assumes authority also assumes responsibility. That means कि जो अधिकार लेता है वह जिम्मेदारी भी लेता है. Third principle of management, discipline. Disciplines, that means follow rules and the regulations on the organizations. Disciplines means obedience, respects and the following organizational rules. Obedience, that means आज्ञा पालन, respects and organizational rules and the regulation को follow करना. It's called discipline. Organizational, जो वर्कर है जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन करना है तो रिक्वायर्ड है डिसिप्लिन. ओके, जो डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे हम मेंटेन करेंगे. The penalty should be applied judiciously to encourage these common efforts. Okay, जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर है जो किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. Fourth principle of management, unity of command. Unity, that means one, and command, that means to order. Unity of commands कहता है कि वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर. जो भी वर्कर है वो ऑर्डर रिसीव करता है ओनली वन मैनेजर. ओके, जो वर्कर है वो वर्क कर सकता है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन, दैट मीन्स कि हमें वहां दिशा बतानी है. एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड मूविंग टूवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉमन डायरेक्शंस. ओके, जो भी वर्कर है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में तो सभी का कॉमन प्लान है कि हमें यही करना है तो हम क्या करेंगे, उसी प्लान पे चलेंगे कि हाँ हमको गोल कंप्लीट करना है. सिक्स प्रिंसिपल्स, सब कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ओके, इस प्रिंसिपल में क्या होगा, जनरल इंटरेस्ट दैट मीन्स का ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और गोल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट दैट मीन्स का खुद का इंटरेस्ट. ओके,
हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है, जनरल इंटरेस्ट को, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। The interest of the one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक नर्स है, उसे अर्ली लीव चाहिए बिकॉज उसका पर्सनल वर्क है, ओके, बट एट द टाइम इमरजेंसी में पेशेंट आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि पेशेंट को हमें पहले केयर देनी चाहिए, ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, जनरल इंटरेस्ट, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। 7 principal remunerations that means का fair payment for work done, ओके, जो भी एम्प्लॉयर्स वर्क कर रहा है तो उसे फेयर पेमेंट मिलनी चाहिए, दैट मीन्स सैलरी मिलनी चाहिए। Many variables such as the cost of living, supply of the qualified personnel, general business should be considered in the determining a worker's rate of pay, ओके, वर्कर को पेमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ओके, जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी वो लोग नहीं दे रहे, तो जो भी वर्कर है वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, ओके। प्रिंसिपल डिग्री ऑफ द सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास पावर होती है, अथॉरिटी एंड द डिसीजन मेकिंग की। फॉर एग्जांपल इन द हॉस्पिटल बजट अप्रूवल एंड द स्टाफ रिक्रूटमेंट के डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट, ओके, इट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। Fayol defines centralizations as a lowering the importance of the subordinate rules. Okay, जो भी subordinate rules है वो centralization क्या करता है, डाउन कर देता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑथोरिटी एंड द डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, जो भी ऑथोरिटी एंड द डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल in hospital, a ward in charge can manage duty roster and the ward supplies independently. Okay, it's called decentralizations. Okay, decentralizations में क्या होता है, increasing the importance of subordinated rules. A degree to which centralizations or the decentralizations should be adopted depend on the specific organization which is the managed is workly. Okay. 9 प्रिंसिपल स्कैलर चेन में क्या होता है, बॉटम टू टॉप लेवल का मैनेजमेंट, जो हियरार्की है वो मेंटेन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल का लेते हैं, ओके, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, पहले वो किसके पास जाएंगे, स्टूडेंट टीचर से हेड टीचर, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल, वो हियरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, ओके, इट्स कॉल्ड स्कैलर चेन। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि टॉप टू बॉटम। Manager is a hierarchies are a part of the chains like authority scale. Each manager from the first line superiors to the president and possess certain amount of authority. It refer to the line of the authority from the top to bottom. Okay, हमने देख लिया है। 10 प्रिंसिपल है ऑर्डर दैट मीन्स हर चीज और हर किसी के लिए जगह है और हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ओके, फॉर द शेक ऑफ efficiency and the coordinations all materials and the people related to specific kind of work, ओके, हमने देखा कि हर चीज और हर किसी के लिए जगह है and should be treated as equally as possible. 11th principle equity that means all employees should be treated as equally as possible, ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है सभी को हमें इक्वली ट्रीट करना है। Principal initiative that means encouraging employees to take new ideas and actions voluntarily. The high priority of management's retraining productions employees, okay, employees should be encouraged to take initiative, okay, जो हम initiative देंगे तो employees में क्या होगा, increase creativity, confidence and the job satisfaction होगा। 13 प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेंशन में क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयड्स है उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसे बार बार ट्रांसफर या रिमूव नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द हॉस्पिटल स्टाफ नर्स है इन पोस्टेड इन द सेम वर्ड फॉर लॉन्ग
पीरियड्स, ओके, वो लॉन्ग टाइम से वहाँ जॉब कर रहे, तो विच हेल्प हर गेन एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड efficiency इन द पेशेंट्स केयर. मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप टू अनकरेज वर्कर इनिशिएटिव, ओके, जो भी मैनेजमेंट है वो जो एम्प्लॉयर्स है उससे इनिशिएटिव अनकरेज करना चाहिए एंड एडिशनल वर्क एक्टिविटी, ओके, जो भी एडिशनल वर्क एक्टिविटी दे रहे वो उसके डायरेक्शन में मीन्स के उसे ऑब्जर्व करना चाहिए. Principle of the Henry Fallot Ascript de Corps. Ascript de Corps, that means teamwork, unity and the harmony among employees in the organizations. Management should encourage harmony and the general feeling good among the employees. For example, in the hospital, where a doctor, nurses and the support staff work as a team during an emergency, okay, helps each other to save the patient life. Okay, उसका गोल एक ही होगा कि हमें पेशेंट की लाइफ को सेव करना है. It is Ascript de Corps, last principle of the Henry Fallots. I hope this explanation was helpful. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more. Thank you.